Arvind, what are your sources telling you where the Delhi police is concerned? An FIR, multiple FIRs were filed under the Connaught Place police station. पर अरविंद, उन सारी FIR में से एक पॉक्सो के अंडर भी है. अभी तक क्या जांच हुई है? पुलिस क्या बता रही है आपको, जो आपके सोर्सेज हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर ये काफी हाई प्रोफाइल भी मामला है और सेंसिटिव भी मामला है. दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स कोई भी इंटरोगेशन से रिलेटेड डिटेल्स वो मीडिया से शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी तक 7 विक्टिम्स के जो स्टेटमेंट है वो दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड किया है. साथ ही साथ जो फेडरेशन है, फेडरेशन से डिटेल्स मांगी गई है कि जिस टाइम पीरियड में ये सेक्सुअल हरासमेंट की FIR लॉन्च कराई गई है, उस टाइम पीरियड्स में विक्टिम्स कहाँ थे, अक्यूज कहाँ था, ये सारी डिटेल्स मंगवाई गई है. सोर्सेज का कहना है कि जब कुछ एविडेंस आएगा और बहुत मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद जो ब्रिज भूषण है उनको पूछताछ में शामिल होने के लिए दिल्ली पुलिस बुला सकती है. हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई नोटिस ब्रिज भूषण सिंह को दिल्ली पुलिस ने नहीं भेजा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के सोर्सेज का कहना है कि जो 7 विक्टिम्स हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए गए हैं. यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीति कि 164 यानी किसी मजिस्ट्रेट के सामने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने 161 के तहत ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, जिसकी बहुत कोर्ट में अहमियत होती नहीं है. तो क्या दिल्ली पुलिस आने वाले दिनों में जो विक्टिम है उनमें से किसी का 164 के तहत मजिस्ट्रेट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगी या नहीं कराएगी, इस पर दिल्ली पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं बताया. उनका कहना है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जा रहा है, फेडरेशन से डिटेल्स मांगी जा रही है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ब्रिज भूषण सिंह ये आप कह रहे हैं कि 7 जो लड़कियां हैं उनमें से एक नाबालिग है, अंडर एज है, उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है? जी बिल्कुल. देखिए, सभी का स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बताया, जो 7 लोग हैं उन 7 का स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस ने लिया है और साथ ही साथ जो फेडरेशन है उनसे भी कुछ डिटेल्स दिल्ली पुलिस ने मांगी. प्रीति, बने रहिए अरविंद. Abhishek, do stay with us. We're going to come right back to you as well. I want to cut across to Mr. Azad, the former IPS officer. Mr. Azad, one thing which is possibly foxing many of us across the country is where multiple FIRs are lodged. One of them is under POXO. One of the girls is, I think, now 16, she's a minor. What would, normal protocol suggest? Should there have been an arrest? In this case, the lawmaker Mr. Sharan hasn't even been called to join investigations. Preeti, as far as the protocol is concerned, they have been violated right from the beginning. The first point is that none of these sports federations even have an internal complaint committee where this matter should have reached at that particular point in January, which was almost, 4 or 5 months back, and immediate action should have been taken. Secondly, the nature of complaint attracts sections of sexual harassment. So it should have straight away gone to the police. Number 2. Number 3, when all this did not happen and when the matter went to the Supreme Court, I think the Delhi police said that, it needs time for preliminary inquiry. Okay. In Lalita Kumari judgment, it is said that yes, if a complaint has been made after a long time, fine, there might be a window for preliminary inquiry. That takes about 5 days. So after that, Preeti, the most important thing in such cases is that you should take these statements before a magistrate. Because, then they can stand by the purity of the incidents that it has been stated correctly and without favor of fear before a magistrate. That was not done. Then the statement took long time, and now it apparently, because I'm not aware, your correspondent says that the statements have been completed. Under 161, sir. Yes, under the police, which doesn't have, value in the court. Now, given the statement, immediately the other person, the accused, should have been called to take his statement, and then the corroboration could have been done. But before that, it was very important that the statement before the magistrate should have been recorded, which has not been done. It is unfortunate that in such a case, now there is political grandstanding for a simple indecision which was taken right in the beginning for whatever reasons, and this man is still outside the purview of the Delhi police, it seems, because they say that after verification of all this, then they'll issue a notice for statement. It's unfortunate.
Mr. Razad, I want to ask you one thing. Usually, again, I would say, you know, common sense, or at least with what we've seen go down in the past, suggests that if there is an FIR which is under POCSO, the onus is on the accused to prove otherwise. Would you have, you know, would you reckon should an arrest have been imminent? Well, it depends, Preeti. I would still say that the police should take a call. And, you know, they can verify, I mean, from the statement itself, the purity of the statement. And the statement immediately can be made before a magistrate, and then immediate action should be taken. But yes, one thing I'll tell you, in hard reality, yes, if the man is not a very important one, the man is not an MP, yes, immediate arrest would be made. That's the unfortunate side of application of law. So, in any other circumstances, viewers, with what we are given to understand, an arrest would have been imminent. Not in this case, though. Mr. Razad, do stay with me. I want to cut across back to my colleague Arvind Ojha, who's been tracking the Delhi police with the very latest. Arvind, ये आपके जो sources हैं, ये दिल्ली पुलिस का क्या कहना है कि मैजिस्ट्रेट के सामने इनका स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? नहीं, जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज हैं, जैसा कि मैंने प्रीति पहले भी बताया कि जो टॉप टू बॉटम जितने भी सीनियर ऑफिशियल हैं, हमने उनसे इस केस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसकी डिटेल्स मांगी। उनका कहना है एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, चूंकि पॉक्सो का भी इसमें केस है, हम डिटेल्स बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो सोर्स है, सोर्स ने हमें बताया है कि जो विक्टिम्स है उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराए गए हैं। 164 का स्टेटमेंट अभी तक जो सोर्सेज ने हमें बताया, अभी तक उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाया, दिल्ली पुलिस ने हमें जानकारी नहीं दी। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये चूंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला है, सेंसिटिव मामला है, इसलिए दिल्ली पुलिस भी फूक कर कदम रख रही है। उनका कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फेडरेशन से भी डिटेल मांगी गई थी। हमने पूछा कि जो अक्यूज्ड है ब्रिज भूषण, उनको कब नोटिस भेजा जाएगा, उनको कब सम्मन भेजा जाएगा और कब इंटरोगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा। उनका कहना है कि जिस तरह से एविडेंस आएंगे उसके आधार पर ही आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो दिल्ली पुलिस करेगी। लेकिन एक बात साफ है कि जो दिल्ली पुलिस है वो इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को, और जो काफी सेंसिटिव भी है, वो पूरी तरह से लीगल एडवाइस लेकर ही आगे बढ़ रही है। पर जो लीगल एडवाइस की बात की जाए, I want to just bring in Abhishek Anand into this conversation. Abhishek Anand, the Supreme Court had told the wrestlers that they wanted an FIR registered. The FIR is registered. Now for anything else they have to approach the lower courts, the High Court. Are the wrestlers going to go that way? Are they going to exercise that option? Well, Preeti, the Supreme Court's order was kind of a jolt, kind of a setback for the protesting wrestlers. They were trying to ensure that under the POCSO Act, Brij Bhushan Singh gets arrested, and that is their final demand. And that is why they are going to sit till 21st of this month on Dharna. Now, the brainstorming inside the camp is going on. They are also consulting with the lawyers, with the councils, what will be the next Mr. step, Razad, how legally they are going to pressurize police to Mr. act. Razad, I want to take in a quick final word from you. I'm sorry I cut you short, Abhishek. I'm running out of time. But would you reckon this is the best way to go for the wrestlers, at least put moral pressure on the police? Well, you know, right now, I think even if they go to the High Court, I mean, High Court cannot do much except because the Delhi police is going to say that the investigations are on and we are planning to do these things. So, as of now, I mean, they're saying that 21st is a kind of a date. I cannot say anything on this. I just, one thing I can tell you, Preeti, in this case, it's moving in the right direction. It's moving very slowly. The only thing important is that when the magistrate statement is taken before the magistrate, one thing is very important, that the players stand by with exactly the same sequence of incidents as they have given to the police. That's a very important. There should not be any kind of a difference between